Good morning to all of you. So now in today's class we are going to revise the chapter force and pressure. As already we have revised the chapter force and pressure, so I am going to cover only the important points of the chapter force and pressure. So what is force? A push or a pull. What is force? A push or a pull, and we cannot see the force. Only what we see the effect of the force. We feel the force. Okay, we cannot see the force. We can only feel the effect of the force. When come into play when two bodies are in interaction with each other. Force come into exist when two bodies are in interaction with each other. Suppose while you are kicking a ball, when you are hitting a ball with the bat, in all the case, what happens? Two bodies are in interaction with each other, then only force come into exist. Now, when we are coming to the type of force, the force are of two types. One is contact force, and other type of force is non-contact force. One is contact force and other type of force is non-contact force. What is the meaning of contact force and what is the meaning of non-contact force? Contact force क्या होता है? When two objects, जब दो object, when they are in physical contact with each other, when two objects are in physical contact with each other, then the force which come into play, that type of force is said to be contact force. वो force कब लगे? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से टच में हो, तभी फोर्स प्ले हो, एग्जिस्ट करे. तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स. एंड व्हाट अबाउट नॉन कांटेक्ट फोर्स? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर. Two objects are in interaction with each other, but they are not in contact with each other, but then also the force is acting. That type of force is said to be non-contact force. So, first of all, when we are talking about the force, the unit of force is Newton. What is the SI unit of force? It is Newton. Contact force are of two types. One is muscular force and other is frictional force. One is muscular force, other is frictional force. Though I have revised this chapter, so I have already said that I will cover only the important points. Now, non-contact force in this electrostatic force, magnetic force, gravitational force, these all are the example of non-contact force. So what is muscular force? When we are lifting anything, when we are walking, when we are riding a bicycle, in all the case, what happens? We are applying a force on that object. Like we have to move an object. So what will happen? Our hand will be in contact with that object. And the force is exerted by the muscle. That type of force is said to be muscular force. And it is an example of contact force because when two objects are in physical contact, अगर आप दरवाजे को टच नहीं कीजिएगा तब तक दरवाजा हम लोग का पुश नहीं होगा. एक जगह से दूसरी जगह मीन्स मूव नहीं होगा. अगर हम लोग कोई ब्लॉक है, एक ब्लॉक रखा हुआ, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो हमें उसको ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? हमें उसको उसके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा. तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज सेड टू बी मस्कुलर फोर्स एंड इट इज एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. अगेन सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े इन द चैप्टर फ्रिक्शन ऑल्सो. दैट इज द 12th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी एंड सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स. What is frictional force? Friction always opposes the motion. What is the friction? Friction always opposes the motion, or it always opposes the direction of motion. But suppose कीजिए कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, अगर आप कोई फुटबॉल को किक कर रहे हो, अगर कोई बैट्समैन है वो बॉल को बैट से हिट कर रहा है, तो ऐसा क्या है
कि जब आप पहले केस में आप देखे थे कि अगर हम लोग फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो थोड़ी दूर वो जाके स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्या है कि जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद बॉल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। द रीजन इज दैट देयर इज अ फोर्स which is always acting in the direction opposite to the direction of motion, and that force is said to be frictional force. And this frictional force come into exist when two objects are in physical contact with each other. That is contact force. Now in the case of non-contact force, electrostatic force, a force exerted by a charged object on another charge or uncharged object. जैसे हमने एक चार्ज ले लिया पॉजिटिव, दूसरा भी चार्ज है पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन केवल इंटरेक्शन पे होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। अगर दोनों अनलाइक चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, द चार्जेस आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, बट देन आल्सो अ फोर्स इज exerting. That type of force is said to be electrostatic force. A force which is exerted by a charged body on another charged or uncharged body. That is electrostatic. Second, magnetic force. Magnetic force. You have seen that north pole. Magnet has two poles. One pole is north and other is south. So like pole, what do they? They repel each other, and unlike pole attract each other. A like pole attract each other and like pole repel each other. So when I will bring one north pole, here is north and here is south, and again one north and one south. So if I will bring them closer to each other. So as they will come closer, they will repel each other. Means दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उससे पहले एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, फोर्स एग्जर्ट होने लगेगा। उसी तरह अगर एक तरफ साउथ पोल होगा और एक तरफ नॉर्थ पोल होगा यहाँ पे, तो दूर पे ही रहेंगे पर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। मींस दोनों बॉडी, ये दोनों ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, बट देन आल्सो अ फोर्स इज एक्सर्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. That type of object is said to be it is an example of non-contact force, and since the force is exerted by the magnet, it is a magnetic force. Third is gravitational force, the force which is exerted by the gravity. You all know that gravity attracts everything towards itself. So, gravitational force, if we will throw a ball upward, then what will happen? It will come after some time to in the downward direction. Because what is happening? A gravity is exerting a force. Means there is a force which is exerted between that ball and gravity. So these all are the example of non-contact force. Because in this, what is happening? The object is not in physical contact with each other. Then also a force is acting. Then also a force is acting. So now that is about the types of forces. Now what are the effects of force? We will come to know about the effect of force. First thing is that if we apply a force on any object, since force, when we apply a force on an object, so maybe the object which is at rest will come into motion. So what will happen? The force, effect of force क्या होता है? फोर्स स्टेट को चेंज करता है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसको क्या किस में ला सकता है? मोशन में। सेकेंड, फोर्स का इफेक्ट क्या है? इट चेंज द डायरेक्शन, इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड इफेक्ट क्या है? इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या था कि जब हम लोग किसी चीज पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर फोर्स लगाए तो वो ऑब्जेक्ट में भी, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो किसमें हो सकता है? मोशन में। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उस पर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? स्टॉप। तो हम लोग फोर्स क्या कर सकते हैं? इट कैन चेंज द स्टेट,
देयर आर थ्री स्टेट. जब हम लोग बात करते हैं तो स्टेट में क्या बात करें, यहाँ पे स्टेट हम नहीं बोल रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है, उस पर अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है वो मोशन में आ सकता है. तो फोर्स में ब्रिंग अ ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इनटू मोशन. फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट or it may decrease the speed of the object. That's why we say that force can change the speed of the object. Third, force can change the direction of an object. Force can change the direction of an object. And force can change the shape of an object. So these all are the effect of the force, which is very much important. कि force की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे वो मोशन पे आ जाएगा, वो आ सकता है, जो मोशन में वो रेस्ट पे आ सकता है. अगर फोर्स जो है हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो अगर रेस्ट पर वो मोशन में आ सकता है. अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में वो रेस्ट पे आ सकता है. हम लोग फोर्स की डायरेक्शन मीन्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. बट याद रखिए, वी कैन नॉट सी द फोर्स, वी कैन ओनली सी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. सो दैट इज अबाउट द फोर्स. ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया. Force is pressure is equal to force upon area. And what is the unit of force? Newton. And what is the unit of area? Meter square. That's why what is the unit of pressure? It Newton per meter square. या हम लोग SI सिस्टम में इसको बोल सकते हैं पास्कल. So what is pressure? Force per unit area. A force which is applied on a unit area. Okay? तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन होता है डिफाइन 1 पास्कल. So what is 1 Pascal? 1 Newton upon 1 meter square. It means if we are applying a force of 1 Newton on an area of 1 meter square, अगर हम लोग 1 Newton का फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, एरिया ऑफ 1 meter square, then the pressure is said to be 1 Pascal. And what is that if the area will be more? एक चीज आप जानिए, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर if force is constant, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, if force is constant, pressure is inversely proportional to area. It means if we will increase the area, the pressure will decrease. If we will increase the area, what will happen? The pressure will decrease. And if we will decrease the area, what will happen? The pressure will increase. I will not discuss the activity as I have already explained in your regular classes. And you can watch the video lecture for the activity, all the activity. That the pressure is exerted on the bottom of the container, pressure is exerted on the side of the container. Yes. So, pressure क्या होता है? आपने example देखा होगा कि अगर हम लोग के पास knife है, एक sharp knife है, एक blunt knife है. So what will happen? A sharp knife can cut the fruit easily, whereas blunt knife cannot cut the fruit easily. Why? In the case of sharp knife, the area is less. And if the area will be less, pressure will be how much more? If the area will be more, pressure will be how much less? It means what? आप लोग देखे होंगे कि nails के जो मीन्स टिप जो होती है, पॉइंटेड एंड जो होता है वो बहुत ही शार्प होता है. वाई? इफ एरिया विल बी लेस, प्रेशर विल बी मोर. यू हैव सीन दैट while we are going to the school, the bag which we are using, the strip of the bag is thick, broad. Strip is broad. Why it is broad? If it will be thin, if area will be less, then the pressure will be more and soldier will give us pain. And if area will be more, then the pressure will be how much? Less. So, what will happen? There will be less pressure. And due to the less pressure, what will happen? The soldier will not pain more.
सो एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. दैट्स वाई if a person is wearing if a girl is wearing high heel sandal, a boy is also wearing a flat foot shoes, and they both are walking on the sand. Suppose एक person एक man है जो कि flat foot का shoes पहन के it is moving on the sand, and a lady is wearing a high heel sandal and she is also moving on the sand. So what will happen? The lady will find more difficulty in moving as comparison to that man. Why? Because the man is wearing flat shoes. So in the case of flat shoes, the area is more. And if the area will be more, what will happen? Pressure will be less. But in the case of lady, what is there? Since she is wearing high heel sandal and the area of high heel sandal is very much less. So since area will be less, so pressure will be more. Okay? So that high heel sandal will go inside the sand. So that's why she will face a difficulty in moving. And second thing is about atmospheric pressure. What do we mean by atmospheric pressure? The pressure which is exerted by the atmosphere. The pressure which is exerted by the atmosphere. Yes. So वो प्रेशर जो कि कौन एक्सर्ट करता है? एटमॉस्फेयर. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We say it as atmospheric pressure. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? We say it as atmospheric pressure. The pressure which is exerted by the atmosphere. Yes. And that pressure which is exerted by the atmosphere, that is very much large. That is very much large. As we have seen in the activity also. एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा है कि साइंटिस्ट वाज व्हाट डूइंग, टेकन अ हेमिस्फीयर ऑफ लार्ज डायमीटर एंड रिमूव ऑल द gas which is present, air which is present inside it, and joined it, and he hold the 8 horses were employed on each end, and then the horses were unable to remove that hemisphere. So hemisphere क्यों ऐसा हो रहा है? Due to the atmospheric pressure. Means pressure always move from higher region towards the lower region. आप लोग बचपन में देखोगे कि एक शक्कर होता था, उसको आप लोग कहीं गोल पे चिपका देते थे, ऐसे तो इजीली चिपक जाता था. फिर उसको रिमूव करते थे तो थोड़ा सा मुश्किल होती थी रिमूव करने में. अगर सपोज के लीजिए उसके अंदर से पूरे का पूरा एयर निकल जाए तो क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट रिमूव दैट. इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके यूटी में एमसीक्यू आएंगे. एमसीक्यू विल बी फ्रॉम द चैप्टर, फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन which is given in means activity, all the important notes which is given in the boxes that are very much important. Yes, that's why I am going through your book, what is given in your book, and in detail if you have to study, so watch all my video lecture which I have already uploaded on my YouTube channel. And again, if anyone feel any doubt, please contact me. Prepare well for your upcoming UT exam. Thank you. God bless you.